Hey tube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So some days earlier, some of the candidates or some of the aspirants of West Bengal SET exam comment me that said please make a video on important topics for West Bengal SET exam 2023. Okay, so here it is. This is the video of upcoming West Bengal SET exam, the important topics for upcoming West Bengal SET exam 2023. Okay, so let's start this video, and I think this video will be very helpful for you for those who are preparing for the upcoming WBSET exams, okay, 2023, which is already dated as 17th of December 2023. Okay, so let's start. And before starting, I am requesting you to all those who are new in my channel, please give a like to the video, share with your friends, and subscribe the channel. And one more thing is that you can get the previous year solutions of West Bengal SET exams in my channel. So you just go to the playlist and search for the West Bengal WBSET mathematical science. Okay, so here you will get the WBSET previous year's paper solution. So I think the paper solutions is also helpful for you, so you can get. So I will share the link in the description, and here also in the just a second, I tab. So here in the I tab of right side, you all know that the I tab. So यहाँ पे आपको मिल जाएगा. Okay, so let's see. In paper 1, you all know that the SET exam, any state SET exam is of 300 marks. Okay, from this 100 marks is the paper 1, and 200 marks is a paper 2. Here we get 50 questions, and here we have 100 questions. Okay, so from the subject we have 100 questions, and this is the paper 1. So if you have if you want to crack the exam, or if you have to crack, or if you have to qualify, then you must score 60 plus from here, from 100, and then 100 plus from here. Okay, because the exams, in the exams almost 160 तक कट ऑफ फास्ट जा सकते हैं. ठीक है, तो आपको as a general candidates you have to take as 160 as a challenge, and you have to obviously crack the exam. Okay, so see, we have now discussed our core paper, that is our maths paper, that is paper 2, mathematical science. This is not only mathematics paper, because in this paper we have also questions from statistics as well as the questions of mathematics. Okay, so from the 100 questions, where is my, so this is, just a second, very, so see, from the 100 questions, okay, so total 65 questions from math section and 35 questions from stat section. Okay, and you all know that there are also two parts in stat section, and there are also two sections or two parts in math section, that is pure mathematics and applied mathematics for mathematics, and in stat exam mathematical statistics and applied statistics for the stats paper. Okay, so now we first go to the mathematics section, and we have 65 questions in total. Okay, now in the 65 questions we have pure mathematics question and applied mathematics questions. Okay, so now we see the important topics and the marks distribution for the pure maths, applied maths. Okay, and then I am also trying to give the names of statistics also. Okay, so let's start. So see, from the pure math, the first topic is, you all know that, the real analysis. Okay, the real analysis. So in real analysis we can get 10 to 12 questions in total. Okay, so you can see that real analysis, the weightage of real analysis is very high in this exam. So the important topics for real analysis are the countability and uncountability in first, then the point set topology, that is the denseness ऊपर होता है ना वो point set topology, then sequence and series, sequence of function, series of function, uniform convergence, and the continuity and differentiability, uniform continuity. These are the most important topics and the most favorable topic for the examiners to make the questions from these topics. Okay, so I think you all revise these parts or these topics before going to the exam. Okay, so these are the important questions or important topics for real analysis. Now comes to the real analysis, linear algebra section. Okay, so in the linear algebra you can get the questions from linear transformation, then basis and dimension, then eigenvalue as eigenvector, then Jordan canonical form, okay, GC forms, so from rank and nullity. Okay, so so these are the main important topics for linear algebra. Okay, and obviously vector space. So these are the main important topics for linear algebra. So you must read these topics once before going to the exams. Okay, from the eigenvalues and eigenvector, easy to easy questions and hard to hard questions can be made from this chapter. So read the eigenvalue and eigenvector chapter very carefully. Okay,
And from the basis and dimension also, there are different types of questions can be made from this chapter. So I'll request you that please read carefully these chapters, and also the linear transformation chapter, linear operator portions, the questions can be asked from the linear operator sections also. Okay, so this is the questions, this is the important topics for linear algebra, you can say. And I think okay, this is the, I think, important topics. And you must those who are candidates of CSIR net, those aspirants of CSIR net, okay, I think you don't have to read any extra thing for the real analysis for the linear algebra. Okay, this is enough to give these exams. Okay, now comes to the complex analysis. Okay, now from the complex analysis, obviously 6 to 8 questions come here, 6 to 8 questions comes. And the complex analysis is very I can say that it is very मतलब क्या बोलूँ मैं, जो है टॉपिक्स बहुत ही कम है, ठीक है, मतलब एक थोड़ा बहुत जो है स्टैंडर्ड थ्योरम्स है यहाँ पर. So you can get 10 to 12 theorems in complex analysis, like Liouville theorem, then maximum modulus theorem, minimum modulus theorem, then Roche's theorem, residue theorem, Cauchy integral theorem, Cauchy integral formula, Morera formula, ठीक है, this open mapping theorem, okay, and residue theorem, integration, complex integration, from integration, differentiation, and okay, so the analyticity. Okay, from here you can obviously get questions, and from this 10 to 12 standard theorems of complex analysis, obviously you can get the questions of complex analysis. So very carefully read these topics, and if you have CSIR net questions paper, then you can obviously practice from here also, and obviously from the WBSET of exam previous paper also, because the level of the exam of the set exams is slightly lower than the CSIR net or GATE exams. Okay, but the syllabus in some cases, if we keep some extra topics, then the syllabuses for these exams or any state level set examination, it's slightly lower than the CSIR net exams or CSIR net exams, okay, as compared to CSIR net exam. But there are some extra topics also which are not in the CSIR net exam paper. Okay, so it comes to one by one that topics also. Now abstract algebra. So in abstract algebra, you also I think you all read the questions where who are those who are aspirants of CSIR net. So there is no different syllabuses for the abstract algebra. Okay, so you must read the group theory and ring theory. From group theory you must read the normal groups and cyclic groups, these types of group, the special groups, different properties of special groups like dihedral group, symmetric group, alternating group, these types of group, quaternary group, ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स, ये सब जो इंपॉर्टेंट मतलब स्टैंडर्ड पार्ट से, स्टैंडर्ड थ्योरम से, स्टैंडर्ड नोटेशन से ग्रुप्स का, तो वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना. And then comes to ring theory. The ideal is a very important topic for you have to make the questions from the ideal, like maximum ideal, prime ideal, then which are ideal, principal ideal domain, integral domain. Okay, so the unique factorization domain. From here you can get like different types of exam. Then homomorphism, like ring homomorphism, group homomorphism, number of homomorphism can be asked in the exam paper. So these are some standard result. The questions can be made from the standard results from the abstract algebra. So I just request that those who are read the abstract algebra very well for the CSIR net exams or the GATE exams or any other different high level mathematics exam. You just go through this paper and you don't need to any extra, you don't need to read any extra topic. But those who are some क्या बोलूँ मैं, low in this abstract algebra portion like me, I also I am not very good at the abstract algebra portion. Okay, abstract algebra portion. So that's why I request you that please go through some important results जो है, तो वो आप number of subgroups counting, number of जो है homomorphism counting in case of both groups and ring, and मतलब basics जो properties है groups का बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. You can give the answer of some questions obviously. Okay, because the level of the question is not so high, so you can obviously give some exams, give some answer of these questions. Okay, so now comes to the topology, measure theory and function analysis. Here also 10 to 12 questions asked in the paper, and you just I don't have sorry, here I want to say that I don't have very deep knowledge in topology, measure theory and function analysis, so I skip this topic. So I just request you, or I can refer you that those who are read the topology, measure theory and function analysis in your degree, in your masters. Okay, so you can just read those books and those topics, the standard results and so on. So you can give the answer of this
answer from here also. Okay, and here also the weightage of these 3 topics is also very high. Here also 10 to 12 questions. I also say that there are some important result, or there are some well-known theorems on topology. Like I remember Ascoli-Arzellas theorem. ये जो theorems है ये सब आप जो है टोपोलॉजी का कुछ डेफिनेशंस भी है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेनली प्योर मैथ्स का पार्ट। नाउ कम्स टू द अप्लाइड मैथ पार्ट। ओके, नाउ अप्लाइड मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, देखो। फर्स्ट तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, दो देयर इज नो पर्टिकुलर सिलेबस फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, दो हु आर एस्पायरेंट्स ऑफ सीएस एंड यू जस्ट go through your syllabuses, like the most important things like system of the ordinary difference, system of equations, then the stability analysis, then the standard Sturm-Liouville problem, that is the eigenvalue problem, then the Wronskian, then Picard's आपका जो है existence and uniqueness theorem, uniqueness existence theorem for the initial value problem, then Lipschitz condition, ये सब जो standards जो ODE का portion है वो आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। Now comes to PD. Here also you can see that from the linear PD can be questions asked. Okay, that is the PD which Cauchy, actually the name of the PD problem is Cauchy problem. So from the Cauchy problem different questions can be asked, and which we solve using the Lagrange's method. Okay, and then the classifications of PD. Okay, classifications of PD, then the heat equation, wave equation, Laplace equations, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको जो आ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आप लैप्लास भी थोड़ा बहुत इंक्लूड करके जो है हीट इक्वेशन या फिर जो वेव इक्वेशन से वो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ से मोस्टली वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन या फिर वन डायमेंशन में ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशंस का जो वेव इक्वेशन या फिर जो हीट इक्वेशन ये तो होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आता है, ठीक है। मतलब CSIR में नहीं आता है, गेट में भी नहीं देखा है, एंड CSIR मतलब एनी स्टेट में मतलब सेट एग्जाम्स में तो नहीं देखा है, ठीक है। तो ये था मोस्टली पीडी का जो पोर्शन से। नाउ आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए मैं रिफर करूंगा, मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है WBSET का अंदर जो प्लेलिस्ट है वहां से आप जाओ, एंड क्लासिकल मैकेनिक्स का एक मैंने नोट टाइप्स का जो है लेक्चर बनाया था, वो आप देखो, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, ये मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस बहुत ही बड़ा सिलेबस है, तो क्या आप कैसे पढ़ोगे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि पूरा के पूरा तो सिलेबस आप पढ़ नहीं सकते हो, एंड ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप इतना ज्यादा सिलेबस पढ़ के जाओ, ठीक है। तो आई रिफर दैट प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट ऑफ WBSET मैथमेटिकल साइंस, एंड यू कैन यू फाइंड वन लेक्चर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड यू कैन गो थ्रू इट। ओके, देन आते हैं, एंड यहाँ से भी 2 to 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड मैकेनिक्स। तो सॉलिड मैकेनिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1 to 2 क्वेश्चंस may be asked in the paper, and here the most favorable portions from the for the examiners is Cauchy stress and strain टेंशन डिफॉर्मेशन से क्वेश्चंस कभी कभी बना देता है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट फॉर द सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, दोज हु आर रीड इन योर पेपर और इन योर सिलेबसेस ऑफ मास्टर्स डिग्री, only you can go through it, but others can read, those who are MSc doing their MSc but do not read this topic, so please keep this topic, okay, because these are very huge topic and 1 to 2 questions only asked, and here the a big types of problem you just give in the paper, and if you have in your mind the answer, then you can only give the answer, otherwise you cannot solve the questions in the exam hall, because there is time is very limited, so you cannot solve this deep very big problem, descriptive problems, okay। So I think this is मतलब क्या बोलूँ मैं, आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है पोर्शन से, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं आपको ये एक चीज बोल सकता हूँ कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशंस के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है, मतलब इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, वहां से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से तो आप रेट ऑफ कन्वर्जेंस फर्स्ट पढ़ोगे, देन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट इज न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा, देन रूट फाइंडिंग, ये जो पोर्शन है तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। बहुत जो फेवरेबल क्वेश्चंस बनाते हैं ये लोग, वो फ्रॉम द गाउस साइडल मेथड, आजकल क्वेश्चंस बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, गाउस साइडल मेथड, गाउस जैकोबी मेथड, ये तो है आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से होता है आई थिंक, ठीक है। एंड देन जो है आपका ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस फाइंडिंग का जो पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रेट ऑफ कन्वर्जेंस से क्वेश्चंस आता है, एंड जो है आपका
डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन में जो आपका ट्रापेजॉइडल रूल है, सिम्पसन वन थर्ड रूल है, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। एंड देन आपका एक मतलब फंक्शन दे सकते हैं एंड फाइन बोल सकते हैं कि यहाँ से कोएफिशिएंट फाइन करो, वो भी क्वेश्चंस आप सीएसआर नेट में एज यूजुअल देखे ही हो, तो वो टाइप का क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू इंटीग्रल इक्वेशन पोर्शन। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन पोर्शन में यू कैन रीड द standard problems like volatile integral equations, how can we solve the volatile integral equations, how can we solve the Freedom integral equation, the eigenvalues from the Freedom integral equations, the conversation that is from initial value problem to volatile integral equation and from the boundary value problem to फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन जो प्रोसेस है, ये आप देख सकते हो कभी कभी। एंड अप्रोक्सीमेशन से ही क्वेश्चंस आपको पूछ लेते हैं कभी कभी जो है रिजॉल्वमेंट करने, you have to just give a questions and you can have to question and you have to find the resolvent kernel. This type of questions can be made also in the paper. So these are the standard types of questions from the numerical analysis, integral equations. And if you are if you are aspirants of CSR net, then you can solve the previous year questions from CSR net for the standard practices. Okay, so now calculus of variations. From the calculus of variations also the standard Euler-Lagrange equations of different types and the isoperimetric problem, the transversality conditions and the maxima and minima, that is जो weak minima होता है, जो standard strong minima maxima जो existence होता है, वहाँ से भी questions आते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है जैकोबीज मेथड है फॉर फाइंडिंग द स्ट्रॉन्ग मिनिमा और वीक मिनिमा और मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द पेपर एंड द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द जो है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ रिकमेंड करूँगा फॉर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, यू जस्ट if you have any questions paper for previous year of CSR net, then you can practice from this paper and using the Laplace's equation you just want to solve the calculus of variations questions. Okay, so these are the for integral equations for calculus of variations. Okay, now for LPP here the syllabus is as compared to CSR net थोड़ा deep है। ठीक है, because so देखो in the questions paper of CSR net you have just asked and questions based on mostly graphical portions. Okay, but in the paper of any state level exams, especially WBSET exams, here you can ask the non-linear linear programming problem, the Kuhn-Tucker's conditions जो होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस मतलब लास्ट टाइम भी आया था, तो ये आप थोड़ा बहुत देख लेना जो है मतलब नॉन लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मोस्टली Kuhn-Tucker कंडीशंस एंड वहाँ पर रिगार्डिंग कुछ थोड़ा बहुत थ्योरम से, तो यू कैन वॉच द वीडियोस एंड डुअलिटी प्रॉब्लम मतलब जो है तो आपका जो एलपीपी बेसिक्स में मतलब ग्रेजुएशन में पढ़े हो पूरा के पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही है, थोड़ा एडवांस में भी आपको पढ़ना है फॉर एलपीपी बिकॉज द क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके, सो दिस इज द क्लियर थिंग एंड नाउ Laplace equations, standard Laplace equations, 1 to 2 questions can be asked from the definitions of standard Laplace equations. You just, if you have any books of Laplace transform or differential equation, you just go through the Laplace's transform, some standard examples. So from these three topics, Laplace, Fourier and Laplace and Fourier, you just go through the different definitions of Laplace and Fourier transform and some standard integrations like beta, gamma, for to solve the questions of Laplace's transform. I think beta and gamma types of integration needed. Okay, so you just go through once these types of problems and if you have those book you have, you just go through some standard examples. Okay, so you can definitely solve these types of problems. Okay, so now discrete math. Okay, so in the last year questions paper 2 questions come from discrete math, so that's why I write here 1 to 2 questions can be asked in the paper of WBSET. That is the last time in from the discrete math paper 1 questions comes from the graph theory and 1 questions comes from the introductory portions from the discrete mathematics. That is the questions I think as I remember the questions asked on the basis of the definitions of lattice. Okay, so these questions also come in the paper. Okay, so these are the portions. So see here the portions for applied mathematics इज मोर देन द प्योर मैथमेटिक्स, मतलब प्योर मैथमेटिक्स का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पर जो है टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो ये था एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट पोर्शन से इम्पोर्टेंट नेम से आई थिंक वो सभी मैंने यहाँ पर बोल दिया। ठीक है, नाउ कम्स टू स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, तो थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है। मैं जितना पढ़ा हूँ एमएससी की बाद सीएसआर नेट के प्रिपरेशन के लिए मैंने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स की मैंने अच्छा लगता था तो थोड़ा बहुत मैंने स्टडी की थी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,
तो सी स्टैटिस्टिक्स में and you can, the mathematical students also solve the questions from basics, the terminologies of probability based theorem, then distribution functions, moment generating functions, characteristic functions, and some inequalities like Cauchy inequality, Markov inequality, Jensen's inequality, limit theorem, central limit theorems, and Markov chain and sampling, Markov chain. So these are the, I think, important topics for statistics, and these are the portions of mathematical statistics. Okay, so now for applied statistics, there are linear model, regression, multivariate analysis, and डिजाइन थ्योरी. सो ये सब है. देन इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, ये सब भी है. तो सिलेबस यहाँ से भी, मतलब स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है. ठीक है, तो मैं जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, आई थिंक वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या 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 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं. मतलब क्वेश्चन पेपर आप स्टडी करोगे तो ये तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि फ्रॉम व्हेयर द क्वेश्चन इज आस्क्ड. ओके, सो आई थिंक I am not going to the deep part of the statistics portion. Okay, so I think in this session you can understand from where the questions can be asked, what are the weightage for the main portions, and the important topics for the WBSET exams. Okay, so if this video is helpful for your preparation, so obviously give a like to this video, and please leave me a comment in the comment section below. And if we skip any topic, then you can also comment me in the comment section. So please, I request, please leave a comment and give a like. Okay, and obviously if your friend also preparing for this exam, so please share this video, or if you also can share this video in your friends group. Okay, so as much as you can, please share this video. Okay, so थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में. ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे भारत. मतलब वंदे मातरम नहीं, वंदे भारत, वंदे मातरम. ओके, सो थैंक यू, बाय बाय.